Good morning and welcome to the next video lecture. The lecture is based on file handling concept. Till now we have covered how to read a file, how to write our program's data inside a file, and how to append a particular file. Right? Append the data in a particular file. Right? In this video lecture, we will discuss about the different file reading modes. Right here, you will get a 3 marks question from this particular video lecture. Clear? And the question is related with program creation only. Here, just see, if you want to read a file, क्या-क्या चीजें अपने को we should the important things that should be there in our mind, क्या-क्या चीज चाहिए वो देखो. Suppose the concept is related with reading a file, right? One question is coming out from the reading of file concept, and here just see how many different reading commands are there in Python. सबसे पहली बात करते हैं. The very first command is read, pq.read, right? The second command is pq.read line. pq is a file handle. Command की बात करें, function की बात करें, read line is the function. Clear? Read line, and the third one it is read lines. These three different functions are there. Now the thing is, तो हम कौन सा यूज करें, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन यूज करना सही रहेगा, दिस इज द टॉपिक. राइट? नाउ जस्ट सी, इफ यू वांट टू रीड द एंटायर फाइल इन वन बुक, concept is, if you want to read the entire file in one go, just see the very first program. Suppose a abc.txt file is there inside the hard disk. You want to read that particular file, so the command is pq equal to open abc.txt comma r. R is the read mode. Clear? Here r is the optional one. If you remove this part, then automatically by default computer opens the file in read mode only. Clear? So here, now just see pq.read, ss equal to pq.read. Here ss is another variable. The variable is, this is the string variable. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है. If you are going to read the file by using read or by using read line, clear? Both these functions read the file in string format, in string mode. Right? They return the file content in string variable. Here, so ss is the string variable, ss equal to pq.read, the whole content of the file going to store inside the ss variable, and ss is of string variable. Now your work is, you have to show the ss variable. So this is the smallest process to read the file and show the overall content of the file. Clear? अभी पूरी फाइल का कंटेंट आपके सामने आ गया, वो पूरा कंटेंट इस ss स्ट्रिंग वेरिएबल में आके सेव हो गया है. नाउ यू जस्ट शो दिस ss वेरिएबल. अभी इसमें क्या होता है, द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग टू रीड द होल फाइल इन वन गो, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल देता हूं. क्या क्वेश्चन है? सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, read the file abc.txt and count how many lines are there in that file. नहीं कर सकते. With the help, by using this particular code, you cannot understand, you cannot judge how many lines are there in the file. Right? दूसरा question, read the file abc.txt and count how many my word, my, how many times this my word is there in the file. ये my, it is a word, ये भी आप इससे फिल्टर नहीं कर सकते. राइट? और एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आते हैं. एक और एग्जांपल है, फाइल को रीड करो और फाइल में ऐसी लाइंस जो ए से शुरू हो रही है, उन लाइंस को ही मॉनिटर पे शो करो. क्लियर? सो इफ यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड, यू कैनॉट डू दीज क्वेश्चंस विद दिस मोड. हाँ, इससे कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो अभी ये भी देखो. फाइल, एंटायर फाइल को एक ही बार में आपने पढ़ लिया. द फाइल डेटा इज देयर इन द स्ट्रिंग वेरिएबल. नाउ if you want to search a specific alphabet or a specific character, कि भाई ये आया क्वेश्चन, इस पूरी फाइल में कितने फुल स्टॉप है, जस्ट काउंट देम. सिंगल लेटर की बात हो रही है. हाउ मेनी @ सिंबल्स आर देयर इन द फाइल.
सिंगल लेटर की बात हो रही है। हाउ मेनी कैपिटल ए आर देयर इन द फाइल, अगेन सिंगल लेटर की बात हो रही है। सिंगल लेटर के ऊपर कोई भी आपको एप्लीकेशन करनी है, देन यू जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर कोड। यू कैन सर्च द पर्टिकुलर अल्फाबेट एट द रेट, आप सर्च कर सकते हो इस स्ट्रिंग में है क्या, है तो कितनी बार है, जस्ट काउंट दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। बट फॉर दैट यू हैव टू यूज फॉर और व्हाइल लूप। Clear? Now just see what is there in the second question here. In this question, the abc.txt file is going to read line by line by using while loop. Just see, it is the while loop of our Python. Here pq.open abc.txt_r, it is the file opening mode. Now I have created one ss string variable. String ही क्यों बनाया, कैसे पता चला स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन वन स्पेस इज देयर, ये स्ट्रिंग वेरिएबल का पहचान होती है। अगर मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट इज देयर, इट मींस इट इज अ लिस्ट वेरिएबल, राइट। जस्ट सी, यहाँ कहीं लगाया भी होगा, नहीं, चलो। सो हियर this is the string variable and I am going to read that particular variable by using while loop. Just see how we can access the file line by line. Here the command is pq.readLine. So the very first, when you execute this while loop, at the first time, the very first line of the file, it is going to store inside the ss variable, and then the line is there on the monitor. Then again while loop, computer is going to read the second line is there on the monitor, then third line, fourth line, fifth line, right? जैसे ही लाइन आपकी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ss वेरिएबल ब्लैंक हो जाएगा। Once the ss variable is blank, the while loop is terminated and you are here in this pq.close command. Clear? So by this approach we can read the file line by line by using while loop. Just see. Clear? You can read the file line by line by using for loop also, और भी easy है। Just see, this is the program related with for loop. pq equal to this, file open, for line in pq. Here with the for loop you need not to write this read line command, automatic line read होगी। क्या डाला मैंने, for line in pq print line comma and this। Here no read line command is there, automatically file content will be there on the monitor, line by line for loop read the file line by line, ये माइंड में रखना, राइट। while loop में तो अपने ऊपर है, we can read the file alphabet by character by character, we can read the file line by line, it is there with this while loop, but with for loop you can read the file line by line. This is the code to read the file line by line. Clear? Now just see, here three different modes are there, read line, read and read line, both these modes returns the file content in string format. One more command is there, read lines a function, it is a default function of Python, or we can say it is a file handle function. It returns the file content in a list format. हाँ, पुराने वीडियो में बता रखा है, इट रिटर्न्स द फाइल कंटेंट इनटू द लिस्ट फॉर्मेट। तो फाइल की जितनी भी लाइनें होगी, हियर लिस्ट वन, इट इज द लिस्ट वेरिएबल, और आपकी जितनी भी लाइन होगी फाइल की वो सारी ऐसे आ जाएगी लिस्ट के अंदर, वन लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 विद स्लैश n। List variable is created by using this read lines command, right? Then you can use for loop with this list variable also. For x in list 1, list के पहला आइटम प्रिंट हो गया, print x means the first item will be there. Now second item of the list, for loop तो चलता जाएगा जब तक लिस्ट रहेगी, second item of the it will print third item, fourth item. So here also you can read the file by using read lines function, and you can show the file line by line by using this for loop, right? Here file closing is compulsory, here also close, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, just add pq.close over here also. So these are the simple programs that are related with reading a file. In the next video lecture we will discuss some more program, and here just see, two important functions are also there in our Python. We use these functions. एक तो function है strip, strip, strip function, right? The second one is split function, split, split. These two functions are also useful in the file reading mode. इसका भी अपन next video में discuss करेंगे, what is split function, what is split function. Okay, thank you very much.